Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, my dear students? Hope everyone is fine. Myself Tulu Bhaiji. Today we will start a new topic that is from English grammar. Topic number 7, naming words. So we will see what is naming words. We use naming words for people, places, animals, or thing. Okay, what is this naming words? Whatever the people, places, and animals or things names are there, that is called naming words. Okay, so for example, we'll see here people, places, animals, and thing. Whatever people, it may be boy, teacher, lady, man. So this is all peoples, right? Places. What are the places? Garden, village, mall, anything. Museum, these are all places. Animals. Animals, cat, duck, dog, goat, rabbit, many more things. And finally the things, cake, needle, spoon, butter, anything that will come in the things. Okay, so we will just directly start with the exercise. Put the naming words in a correct groups. What you have to do, you have to put the naming words in a correct groups. मीन्स आपको क्या करना है, जैसे पीपल, प्लेसेस, एनिमल, थिंग्स के ये 4 ग्रुप बनाए हुए. ओके, सो आपको उसमें से क्या करना है, आपको ग्रुप वाइज नेमिंग करना है. जो भी आपके नेमिंग चीज़ें हैं ना, वो आपको ग्रुप वाइज डालना है. जैसे पीपल्स में आपको डालना पड़ेगा ऐसा कुछ भी, बॉय टीचर्स है, लेडी है, गर्ल्स है, वैसा. प्लेसेस में कौन सी प्लेसेस रहती है. एनिमल्स तो कैट, डक और थिंग्स, केक, नीडल, वट एवर. So we'll start first the first one. What is the first one here? Can anyone tell me? See, already the people is given here. Okay, so people is there and places is also there. Animal is there and things are there. Okay, things are there. And here all the options are given here. Okay, now we have to name the words in a correct groups. What we have to do, we have to name the words in a correct groups. हमें क्या करना है, जो भी words है ना, उनके जो names है words के, तो वो हमको correct groups में डालना है कि कौन सी चीज़ किधर आएगी. Okay, so the first one is bee. honey bee. honey bee क्या हो गया, ये भी एक एनिमल की जैसा है. ओके, बर्ड्स रहे, फिश रहे, इंसेक्ट्स रहे. ओके स्टूडेंट, अगर बर्ड रहे हैं, फिश है या इंसेक्ट्स रहे तो हाँ आर ऑल्सो नोन एज एनिमल्स. उनको एनिमल्स ही बोला जाएगा, एनिमल्स में ही उनको काउंट किया जाएगा. तो ये हमारा बी एनिमल्स में आ जाएंगे. व्हाट इज़ द सेकेंड वन? हॉस्पिटल. हॉस्पिटल क्या है? इट इज़ अ प्लेस. एक प्लेस पे है ना, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, लाइक दैट. तो ये इट विल कम इन प्लेसेस. अगेन व्हाट इज़ दिस? बीच. अभी बीच है. सी शोर. सी शोर है तो एक प्लेस हो गई. ओके, सो इट विल कम इन अ प्लेस. नाउ डॉक्टर. नाउ डॉक्टर, हु इज़ द डॉक्टर? डॉक्टर विल कम इन अ पीपल. हमने आपको पहले ही बताए थे ना, डॉक्टर्स रहे, लेडीज़, बॉयज़, गर्ल, मैन, वुमेन, जो भी रहेंगे तो ये पीपल्स की कैटेगरी में आते हैं. तो एक डॉक्टर है. ओके, तो ये इट विल कम इन अ पीपल्स. पीपल्स मीन्स ह्यूमन बींग्स है ना सब. नेक्स्ट वन, माउस. व्हाट इज़ द नेक्स्ट वन? माउस. नाउ माउस विल कम इन विच ग्रुप? यस, इट विल कम इन animals. Next one, lady. Now it's very simple, students. Where lady will come? Very good. Guess right. It will come in a people. Again, what is this? This is chair.
और चेयर इज़ अ नॉन लिविंग, मतलब उनको थोड़ी कुछ लगता है, इट्स अ थिंग, वो तो ऐसे ही रहते हैं ना जगह पे। हम अगर उनको शेक करते हिलाते हैं तो ही वो हिलते, नहीं तो वो अपने आप हिलते तो नहीं। तो ये सब चीज़ें थिंग्स होती हैं, तो वी विल राइट इन अ थिंग्स. What is this? This is peacock. Okay, so peacock will come definitely in animals, as you all know. आपको तो पता ही है कि peacock bird है, तो हमने तो already read किए हैं. Birds, fish and insects सब animals में count होंगे. Then come to school. School क्या है students? It is also a place. एक प्लेस पे है ना स्कूल, हम जाते आते जाते हैं रोज़, डेली अप डाउन करते हैं स्कूल के लिए. सो इट इज़ अ प्लेस. व्हाट इज़ द नेक्स्ट वन? बुक. नाउ अगेन, बुक अपने आप हिलती है, कुछ करती है नहीं ना, इट्स अ थिंग. हम ही उसको अपने यहाँ से उठाते वहाँ पर लेके जाते हैं, तो इट विल कम इन अ थिंग्स कॉलम. अगेन शेल. व्हाट इज़ दिस शेल? शेल भी तो एक थिंग की है, वो भी तो वैसे ही रहता है, राइट स्टूडेंट्स? तो शेल किस में आएंगे? थिंग्स में. लास्ट वन, क्लाउन. नाउ क्लाउन. क्लाउन मीन्स अनदर वर्ड क्या है क्लाउन का? जोकर. अभी जोकर क्या है? वो भी एक पर्सन है, पीपल है ना हमारे जैसा, लेकिन वो गेटअप वैसा लेते हैं जोकर का, क्लाउन का, तो वो भी तो पीपल्स में आ जाएंगे. यस. सो स्टूडेंट्स, इट वॉज वेरी इजी ना नेमिंग वर्ड्स. पीपल, प्लेसेस, एनिमल एंड थिंग्स हमको कैटेगरी के अनुसार उनके वैसा कॉलम्स में राइट कर देना है. सो स्टूडेंट्स, you have to write this in your English grammar book. So moving to the next page, we'll start with the exercise B. Look at the picture, complete the words given below to get the naming words. What we have to do? We have to look at the picture here. The picture is given. What you can see from the picture? It's a garden. Okay, there are apples on the trees, coconuts on the tree, coconut tree, apple tree, dustbin. Okay, dustbin is there, bird is there, boy, girl, squirrel, dog, tortoise, butterfly, frog, pond. This is a small pond, no? Water pond. Lamp, bench. Okay, clouds, seesaw, lamp post. So student, it is all visible. As you can see, this is a garden and this all things are there. So what we have to do? We have to name the words here. Already they have given the words. It's a fill in the blanks type. So we have to fill the words to get the proper naming words. Means हमें ये already naming words दिए गए हैं. ओके, लेकिन ये फिल इन द ब्लैंक मिसिंग अल्फ़ाबेट्स जैसे रहते हैं, मिसिंग वर्ड्स जैसे हैं. सो आपको वो फिल करके आपको वो वर्ड्स बनाना है. सो हियर वी गो. व्हाट इज़ द फर्स्ट वन? इट्स अ swing. Already swing is given. SWING. Where is the swing here? Can anyone tell me where is the swing here? Yes, it is this swing here. What is the second one? This is BT-ERF-Y. It is a butterfly. Yes, where is the butterfly here? Yes, it is a butterfly. And what is the spelling of a butterfly? BUTTERFLY. What is the third one? Where is the third one? The third one is a boys. See, all the boys are there na here. Boys. So we will write here BOYS, boys. What is the fourth one? Can anyone tell me what is the fourth one?
seesaw. Here you can see it. You can see it here. It is a seesaw. The boys are playing on it. What is the spelling of a seesaw? Yes, S-E-E-S-A-W. What is the spelling of a seesaw? S-E-E-S-A-W. Seesaw. What is the fifth one? Fifth one is a lamppost, as you can see here. Okay, lamppost. And what is the spelling of a lamppost? L-A-M-P-P-O-S-T, post. L-A-M-P-P-O-S-T, post. What is the spelling of a lamppost? L-A-M-P-O-S-T, post. What is the sixth one? Okay, what is the sixth one? The sixth one is a girl. You can see a girl. What is the spelling of a girl? G-I-R-L, girl. What is the seventh one? Now the seventh one is bench. And where is the bench? Here. B-E-N-C-H. B-E-N-C-H. Bench. What is the eighth one? Can anyone tell me what is the eighth one? Eighth one, G-S-S. It's a grass, as you can see. All this is a grass. The greenery is a grass. So what is the spelling of a grass? G-R-A-S-S, grass. What is the ninth one? Ninth one is a trees, as you can see. Where is the trees here? Yes, there is a tree here. As you can see here, trees. So what is the spelling of a tree? T-R-E-E-S, trees. What is the 10th one? Dog. Yeah, you can see a dog. What is the dog spelling? D-O-G, dog. What is the dog spelling? D-O-G, dog. What is the 11th one? Pond. Now this is called pond, small pond. जहाँ पर स्मॉल सा वाटर रहता है ना, थोड़ा सा ऐसा रहता है, उसमें से वाटर रहता है, पीते हैं एंड ऑल, एनिमल्स रहे, कुछ भी रहे, सामने थोड़ी ग्रास रहती है, डैट इज़ कॉल्ड पॉन्ड. P-O-N-D, pond. What is the 12th one? 12th one is a tortoise. And what is the spelling of a tortoise? T-O-R-T-O-I-S-E. Tortoise. T-O-R-T-O-I-S-E, tortoise. What is the 13th one? Squirrel. And what is the spelling of a squirrel? S-Q-U-I-R-R-E-L, squirrel. S-Q-U-I-R-R-E-L. What is the spelling of a 14th one? And what is the 14th one? Which word it is? It is a frog. And what is the spelling of a frog? F-R-O-G, frog. F-R-O-G, frog. And the last one. What is the last one? Here it is, in a penguin shape. It is a dustbin. What we have learned? Throw rubbish in a dustbin. So what is the spelling of a dustbin? D-U-S-T-B-I-N, dustbin. D-U-S-T-B-I-N, dustbin. So from this, we have completed the exercise B. So students, you have to write all this in your English grammar book itself. Till then, take care, stay home, stay safe. Allah Hafiz.